Hello students, today we start of class 9th number system rationalization. Rationalization, suppose we are given a number whose denominator is irrational, then the process of converting it into an equivalent expression whose denominator is a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. Suppose I take an example, suppose 3 upon root 5. Here denominator is root 5. If we multiply by root 5 on numerator and denominator, that is called rationalizing the denominator. 3 root multiply 3 into root 5, 3 root 5, and root 5 5. It's the rationalize the denominator. Some rationalizing factors conditions are given. If a plus root b and a minus root b, then if we multiply in these those terms, then we find a square minus v, which is rational. Similar, a plus b root x and a minus b root x, if we multiply those terms, then we find a square minus b square x, which is rational. Similarly, root x plus root y and root x minus root y, when you multiply those terms, you find x minus y. Right? Now we start exercise 1f. Write the rationalizing factor of denominator 1 upon root 2 plus root 3. Rationalizing factor of denominator root 2 plus root 3. Students, rationalizing factor, its rationalizing factor opposite sign of this given sign, इसका opposite sign हो जाएगा. It means इसका rationalizing factor होगा root 2 minus root 3. Clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि इसका rationalizing factor बताइए. Question number 2, rationalize the denominator of each of the following. 1 upon root 7. Before of this question, I explain example. 3 upon root 5. I multiply by root 5 on the both numerator and denominator. Root 5 upon root 5. 3 multiply root 5. 3 root 5. Root 5 into root 5. You get 5. Similarly, students, solve this point. Second point, root 5 upon 2 root 3. Here rationalizing factor is root 3, because root 3 is irrational. So if you multiply root 3 in a numerator and denominator, then you find that it's the rationalize the denominator condition. Second condition, root 5 upon 2 root 3. If we multiply by root 3 both numerator and denominator, root 5 into root 3, you find root 15. Root 3 3 2 just 6. Clear? Root 15 upon 6. Similarly, 1 upon 2 plus root 3, here rationalizing factor 2 minus root 3. अब यहाँ पर इंटू में था 2, इसलिए उसको नहीं लिया गया. यहाँ पर प्लस में है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3. राइट? रूट 5 माइनस 2 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा रूट 5 प्लस 2. 5 प्लस 2 3 रूट 2 का इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 5 माइनस 3 रूट 2. इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा रूट 7 प्लस रूट 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होगा. राइट? 7 पॉइंट रूट 11 माइनस रूट 7, इसमें इसके भी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा. रूट 11 प्लस रूट 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 प्लस रूट 2. 2 प्लस रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होगा. और सिमिलरली यहाँ पर भी इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 माइनस 2 रूट 2. 3 माइनस 2 रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. और इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है. ओके, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा ताकि स्टूडेंट्स इन सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें. थैंक्स.